Dear students, this is my third lecture. I am giving you homework for chapter number 1, Light in the Night. Please do your work in the text copy. Now start. Draw 3 columns. Words, English meaning, Urdu meaning. Number 1, enforce, to make sure something is done. नाफिज करना. Wick, a string in oil. बत्ती. क्लाउडलेस, विदाउट क्लाउड्स, बगैर बादल के निखरा हुआ. नंबर 4, रोम, रंबल, वाउंडर ओवर, इधर उधर फिरना. नंबर 5, डिसऑनेस्ट, इनसिंसियर, बेईमान. नंबर 6, फ्यूल, गेटिंग फायर मटीरियल, ईंधन हासिल करना. नंबर 7, इल्यूमिनेटिंग, लाइट अप, रोशन करना. नंबर 8, रिलायबिलिटी, डिपेंडेबल, भरोसा, एतबार. नंबर 9, ट्रिम, क्लिपिंग, बैलेंसिंग, किनारे तराशना. नंबर 10, फॉरसी, एक्सरसाइज फॉर साइट, तवक्के करना. नाउ ओपन पेज नंबर 11. Copy the sentence that are true, change the ones that are not true so that they are correct and then write them out. अब इसमें जो आपको ट्रू फॉल्स करने हैं, जो ट्रू हैं उसको आपने ट्रू लिखना है और जो फॉल्स है फॉल्स. लेकिन कैसे? पहले सही करके. जैसे आपने ये लिखा हुआ है लंदन हैड स्ट्रीट लैम्प बिफोर पैरिस. अब ये जो बिफोर का लफ्ज़ है यानी कि लंदन में जो स्ट्रीट लैम्प्स थे वो पेरिस से पहले लगे थे या बाद में. तो अब आप इसको पहले सही लिखेंगे, लंदन हैड स्ट्रीट लैम्प्स आफ्टर पेरिस. ये लिख के उसके बाद आप इसको लिखेंगे कि ये फॉल्स है. इसी तरह सेकंड लिखेंगे कि लंदन ग्रू रैपिडली इन द 1700 सेंचुरी. ये ट्रू है. लैम्प लाइटर्स वर्क ऑल डे. अब यहाँ पर लिखा हुआ है तमाम दिन काम करता था लैम्प लाइटर्स. नहीं, वो जो है सुबह बुझा दिए जाते थे और शाम में जलते थे. शाम में तो ये जो है आपका हो गया फॉल्स. पहले आप इसको सही करके लिखेंगे, फिर लिखेंगे फॉल्स. फिर हो गया डी, द ऑयल लैम्प्स यूज्ड टू गिव ऑफ अ प्लेजेंट स्मेल. तो प्लेजेंट स्मेल नहीं थी बल्कि अनप्लेजेंट स्मेल. तो इसको आप यहाँ सही करके फिर इसको आप लिखेंगे इसके आगे कि ये फॉल्स है. उसके बाद है लैम्प लाइटर यूज लैडर टू क्लाइम अप एंड लाइट द ऑयल लैम्प्स. तो ये जो बात सही है, ट्रू. उसके बाद लास्ट है चार्ल्स डिकेंस वॉज अ लैम्प लाइटर. तो वो लैम्प लाइटर नहीं थे बल्कि वो कौन थे? ऑथर थे. तो ये फॉल्स है. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन बी, बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स were introduced, what were the dangers that people face if they went out at night? Answer, before street lamps were introduced, the dangers that people face if they went out at night were that they could trip, fall and injure themselves or drown if they fell into water or be attacked or robbed. Now question C, who were link boys and what did they do? Answer, the link boys were young men who would, for a small fee, had a burning torch or lamp ahead of people so that they could see the way through the dark streets. Now next, reference to context. A, the authorities realized the benefits they bought and took over the installation and maintenance of them. Question number 1, what is meant by the authorities? Answer, the authorities refers to the people in charge of the country such as the city council, the government, the rulers, etc. Now question number 2, what were the benefits of having street lamps? Answer, the street lamps reassured people and made them feel safer. They allowed people to keep working and entertaining after dark. Please take screenshots so that you can work easily. As the quantity or quality of a noun. For example, his uncle is a rich man. Here man is a noun and rich is adjective. Rich shows quality of a noun which is man. Second, 6 boys fell down.
boys is noun and 6 shows number or those boys. That is why it is adjective. Similarly, sweet mango. Quality of this mango. Mango is a noun and the quality of this mango is sweet. So students, here sweet is an adjective because it shows or tells us the quality of mango. Now open your book, page number 11. Think of suitable adjectives to use with these nouns. You may choose words from the text or use your own. A dash lamp. Bright lamp, empty lamp. Bright and empty adjective. Lamp is a noun. Second, dash ladder. Short ladder or long ladder. Short or long is adjective. Ladder is a noun. C dash streets. D dash work. E dash city. F dash light. You can choose suitable adjective from this chapter. Do this work in your grammar copy. Dear student, this is the end of today's lecture. Please complete your homework before next lecture. Thank you. Allah Hafiz.